Hello everyone, welcome to the CommerceAchiever platform. With today's session, we are going to discuss something very important for the aspirant. And yes, we are going to discuss something about the past year paper. We are going to discuss in both the language Hindi and English. So it's my humble request, at least for this particular session, kindly stay connected with us and I'll discuss this why I'm discussing this suddenly with you all people. I'll highlight that also. One of the aspirant has raised a query that ma'am, I got the book, he solved a number of questions but he is quite nervous like how it is co-linked with the past paper. So I'll take you in that journey and I will solve one question from the past papers which I am able to give you an assurance that yes, you can do it past papers on the basis of the books of Commerce Achiever you are referring. ठीक है, तो आज हम आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं. एक स्टूडेंट की क्वेरी थी, उन्होंने बुक से क्वेश्चन सॉल्व किया और उनको लगा कि भाई उन्हें 500 क्वेश्चन या 600 क्वेश्चन करने चाहिए. बट मैं इन सेशन की मदद से आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ कि जितने उसमें क्वेश्चंस हैं काफ़ी एम्पल क्वेश्चंस हैं, बट हर एक चैप्टर पे आपको एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं. एक बेसिक आप यूपीएससी के एग्जाम में बैठ रहे हो तो उसे माइंडसेट में रखना है. तो इस वजह से आज हम एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाएंगे, उस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करेंगे. हाँ, और मैं आपको को लिंक कराऊंगी कि वो क्वेश्चन आपका को रिलेटेडली बुक में उठाओ मेंशन है ऑलरेडी विद सॉल्यूशन. आपने एग्जैक्ट फिगर नहीं दिया, बिकॉज एग्जैक्ट फिगर देने से क्या आपको रट्टाफिकेशन हो जाएगा, बस फिगर्स को चेंज किए हैं. तो आप फिर भी अगर उस चीज को ध्यान से कर लेते हैं, बुक के न्यूमेरिकल को आराम से कर लेते, तो वो होल सोल सफिशिएंट है. और उसके अलावा हम आपको जो टीम आपको ईमेल करती है एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए, वो आपकी चॉइस है, आप कर लोगे तो वेल एंड गुड है, बट बुक के क्वेश्चंस आपको करने हैं एट एवरी कॉस्ट. और अगर आपने क्लासेस ऑप्ट की है तब तो आपको और भी परेशान नहीं होना, क्योंकि क्लासेस में हमने ऑन एन एवरेज 15-20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा जहाँ जहाँ चैप्टर्स में रिक्वायर्ड है, मिनिमम 10 क्वेश्चंस या 5 क्वेश्चंस, जहाँ पे जितना बड़ा टॉपिक है रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको क्वेश्चन शेयर किए गए हैं. तो उतना सफिशिएंट है, आपको उतना ही प्रैक्टिस करना है. और मैं आज आपको लिंक कराऊंगी कि कैसे वो आपके पास पेपर्स के साथ है. और अब तो हम पास पेपर्स के सॉल्यूशंस को भी वहाँ पे को लिंक करके आपको शेयर कर चुके हैं कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, बुक आपके लिए होल सोल सफिशिएंट है, आपको कोई और मटेरियल लेने की जरूरत नहीं. बट वो जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको समझेंगे, रट्टाफिकेशन नहीं करना है. ठीक है, तो चलिए मैं आपको ना कनेक्ट करती हूँ पास पेपर से और हम सॉल्व करेंगे उस पास पेपर को. ठीक है, तो प्लीज स्टे कनेक्टेड. ओके, सो आई एम कमिंग टू दी website. I just try to open it for you people. I'm connecting with the website. Please give me a moment. Okay, so this is a website we come up and we are going to the UPSC Commerce optional block and on the past paper. So I'm going to discuss and co-link with the activity based costing because student raised query on that only. So I'm going to be very specific with that. 2017 paper I'm going to take. Okay, so in 2017 paper I'm going to refer the paper 1 for the numerical. And here is the paper in front of you. Okay, so for activity based costing he raised a question, so I'm going to link you with the activity based costing and that is sufficient for all the your numerical. Okay, this is the question. Okay, I'm just helping you to write down this question, 2017 paper. Okay, and you can see that this paper, this is the question number 3A. So question 3A. Okay, you can just cross verify that I bring you an original paper in front of you. A company manufacturing two products furnishing the following data: product A and product B. Annual output is given 5,000 and 60,000 respectively. Total machine hour is given 20,000 and 120 hours respectively. Total number of purchase order 160 and 384 given respectively. Total number of setups 20 and 44 given respectively. So the annual overhead are as under. Volume related activity cost is 5,50,000. Setup related cost is 8,20,000 and purchase related cost is 6,18,000. You are required to calculate the cost per unit
of each product A and B based on traditional method of charging overhead and activity based costing. So you can see, ठीक है, लेट्स कंक्लूड इन द क्विकली इन द अदर लैंग्वेज. तो आप देख सकते हैं 2017 का हमने पेपर निकाला, पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 3A, ये आपका न्यूमेरिकल है. एक्टिविटी बेस का हम बेस एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं ताकि हम उस स्टूडेंट को जो है जो स्टूडेंट की क्वेरी थी उसको कॉन्फिडेंस भी देते हैं और एक जनरल व्यू आपके सामने, एक सैम्पल व्यू आपके सामने रख सकें, और कोई अदर मोटो नहीं है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपके सामने 2017 का क्वेश्चन नंबर 3 है. बुक में क्वेश्चन सारे कवर किए गए हैं इसलिए हमने बुक्स को कवर अप किया है, बट एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है. यस, फिगर्स को चेंज किया क्योंकि आपको क्या लगता है क्या ये सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट होगा? नहीं, आपको बस ये है कि मैंने ये पैटर्न ऑफ क्वेश्चन समझ लिया, ये पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस मैंने कवर अप कर लिया, तो ये सारा कुछ सफिशिएंट है, आपको एक्स्ट्रा कोई बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो ठीक है, अगर आपने क्लासेस भी किए हैं तब तो आपको ये न्यूमेरिकल, ऐसे पर्टिकुलर न्यूमेरिकल मल्टीपल टाइम्स आपको दिए जा रहे हैं प्रैक्टिस करने की, और सफिशिएंट है. आपको ऐसा नहीं है कि 200-400 क्वेश्चन करोगे तभी कॉन्फिडेंस. ऑप्शनल के अलावा बाकी पेपर की भी तैयारी करनी है. सो स्ट्रैटेजिकली एंड स्मार्टली चलना है, ट्रस्ट करना है, सक्सेस आपकी ये गारंटी है. ठीक है, तो चलिए अब हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं. आपने क्वेश्चन पेपर देख लिया, आपने क्वेश्चन देख लिया, क्लियर? प्लीज गिव मी अ मोमेंट. ओके, सो आपने क्वेश्चन देख लिया और मैंने आपको क्वेश्चन पेपर से कनेक्ट कर दिया है. 2017 क्वेश्चन नंबर 3 है. तो चलिए हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं. ठीक है, और हम सॉल्व करेंगे हमारा जो ये गिवन क्वेश्चन है. ठीक है, ओके. तो सबसे पहले हमें ट्रेडिशनल, फर्स्ट वी हैव टू डू द कैलकुलेशन एज पर द ट्रेडिशनल मेथड. Okay, so we have to solve as per the traditional method. So for calculating we are required to calculate cost per unit, statement of cost per unit, particulars, and we have two product A and B. Okay, so we are required to calculate on the basis of your traditional based output. On output base we have output of, for product A we have 5,000 units and for product B we have 60,000 units. So we enclose that. We have nothing about the direct material, we have no information about the direct labor. So let's go to the note. Okay, because it's a traditional system and question is not spoke about anything about the labor hours, so we have to allocate these overhead cost on the basis of machine hours. So let's compute this rate, overhead rate. We are required to calculate the overhead rate. For that we need to have a total overhead cost. So total overhead cost we have 5,50,000. Okay, and then we have 8,20,000. If you don't have a question with you, please open, you can open it that, and 6,18,000. Right, please do the total of all these things. 5,50,000 and 8,20,000 and plus 6,18,000. It's total 19,88,000. 19,88,000 is your total overhead. Okay, and we have machine hours. How many hours totally we have? 1,40,000. So we can calculate the rate, 19,88,000 and 1,40,000. Yes, calculator is allowed. Don't ask these type of questions because I already discussed in the basic areas. So 14.2. Okay, we have a rupees 14.2 per machine hour. I'm writing shortcut. Please avoid for the purpose of examination. Okay, so we have rupees 14.2 as a machine hour. So what the machine hours we have? For product A we have how many? The machine hour is 20,000 and 1,20,000 machine hour is for product B. Okay, and we have rate. What is the rate? 14.2.
20 we calculated. So now you can calculate the total overhead. Just put it as 1, 2, 3 and 4. So total overhead 2 into 3, okay, easily 20 into 14.20, 2,84,000, 2,84,000, and then we have 1,20,000 into 14.20. We have 17,04,000, 17,04,000. But this is on the basis of machine hour. We are required to calculate cost per unit. The demand of question should be in your brain every moment. Okay. So cost per unit. So 4 divided by 1. Do you agree? Please do not do any kind of memorization or rectification. Do you agree with this? Yes, you should get agree. If you have any doubt, do ask. Okay. So we have 2,84,000 and this need to be divided by 5,000 because the demand of the question is cost per unit. You will get in rupees 56.8. Okay. And in the second case, you will get, okay, 28.40, 28.40. This is as per the your traditional system. Okay, so part 1 is solved. You already solved this part 1 as a purpose of calculation. Hope you agree, and if you satisfied and in case of any doubt, do ask. So let me conclude in the other language quickly. ठीक है, तो आपका 2017 का क्वेश्चन नंबर 3 ये पेपर आपने खोल के रखना है. ये पेपर है, आपने क्वेश्चन की डिमांड क्या थी? कॉस्ट पर यूनिट. बिल्कुल माइंड से ये नहीं निकालेंगे, डिमांड को हमेशा माइंड में रखना है. तो कॉस्ट पर यूनिट आपकी आ गई, आपको निकालना है. आपके प्रोडक्ट ए और बी है. ए का आउटपुट है 5,000 और बी का आउटपुट है 60,000. क्वेश्चन में ना ये नहीं गिवन है, डायरेक्ट लेबर आवर्स नहीं गिवन है. तो ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या होता था, आवर्स बेसिस पे लेते थे. अगर आपने थ्योरी ध्यान से पढ़ी है तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा. तो भाई जब लेबर आवर्स नहीं दिया गया है तो हम क्या लेंगे? मशीन आवर्स. अगर आपको इसके लिए भी कोई डाउट लगता है ना तो आप प्लीज इसके लिए एक नोट दे देना. ठीक है, तो अब मशीन आवर्स के बेसिस पे हमें कैलकुलेट करना है. तो हमें ओवरहेड का रेट तो चाहिए ना, तभी तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे उसका डिस्ट्रीब्यूशन. तो टोटल ओवरहेड कॉस्ट हमने तीनों ओवरहेड को ऐड कर लिया, टोटल आ गया 19,88,000. ठीक है, मशीन आवर्स हमने दोनों को ऐड किया, टोटल आ गया 1,40,000. तो मशीन आवर रेट आ गया, यानी जो भी आपका ओवरहेड रेट है पर मशीन आवर, ओवरहेड रेट पर मशीन आवर कितना है? 14.20. क्लियर है? कोई डाउट नहीं. क्यों डिवाइड किया, क्यों इन चीज़ों को ऐड किया, ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए. प्लीज़ आप इसे रटेंगे नहीं. रेट हमें मिल गया 14.20. अब हमें मशीन आर था, हमने पुट कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ए बी रिस्पेक्टिवली में. 20,000, 1,20,000 गिवन है. रेट आपने कैलकुलेट कर लिया 14.20 रिस्पेक्टिवली. अब टोटल ओवरहेड निकाल लोगे मशीन आर्स के बेसिस पे. 2 into 3 आपने 2,84,000 ए का आ जाता है, 17,04,000 बी का आ जाता है. अब क्वेश्चन की डिमांड क्या थी? कॉस्ट पर यूनिट पूछा था. तो आपने ओवरहेड को डिवाइड कर देना है आउटपुट से, आपको आ जाएगा 56.80 और 28.40 रिस्पेक्टिवली कॉस्ट पर यूनिट अंडर द ट्रेडिशनल सिस्टम. क्लियर? पास पेपर का क्वेश्चन है, और अगर आप बुक देखेंगे ना, ऐसे क्वेश्चंस ऑलरेडी गिवन हैं. तो आपने क्यों सोचना कि आपको 10 बुक्स की ज़रूरत है? आदत लग गई है पुरानी की भीड़ इकट्ठी करनी. नीड नहीं है, बिल्कुल भी नीड नहीं है. आई एश्योर यू. और जितने भी मैक्सिमम चीज़ें होंगी, जितना मैक्सिमम सपोर्ट होगा, आई कीप ऑन ट्राई एंड टीम विल कीप ऑन ट्राइंग टू हेल्प योर पीपल. सो ओनली जस्ट यू हैव टू डू इज टू फोकस एंड स्टे, कीप वर्किंग हार्ड. Okay, so let's move ahead and do the second part of the solution. ठीक है, सॉरी, अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड costing method, right? We are required to prepare the statement of cost per unit. Okay, again the demand of the question is cost per unit. Okay,
So this is the product A and B. Again we are using the output. It's because we are required, the demand of the question is cost per unit. There is a 5,000 unit for product A and 60,000 unit for product. We will close this for the timing. Okay, and we just try to mention the our total overhead, so we can calculate the rate. First is required to calculate the rate. So again we need a note. We need to calculate the rate. So volume related, sorry, one second. Okay, so we are required to calculate the rate. So volume related activity cost, volume related activity cost. Okay, why this cost incurred? Why? What is the reason? There is some activity because of which this overhead incurred, right? So the amount was rupees 5,50,000. I will connect you. Just give me a moment. Okay. Second overhead is setup related cost. Setup related cost. Okay. The amount is rupees 8,20,000. Why this cost incurred? There is some activity which is already undergone or will be undergone, and because of which we have a setup related cost. Okay. And next, the last one is the purchase related cost. Purchase related cost. Again the same funder, why this cost incurred? Because of some activity. It is very important for us to understand the activity. Now some of these students might get confused and they do not, because of there is a lot of pressure while you are sitting in the examination on. What you have to do is, for the setup related cost you have total number of setup, easy for. For purchase related cost you have a number of purchase order, easy for. For volume, volume means that you are carrying some quantities. Okay, so that means you have to prepare them. It's prepared under the machina, so you have to be work strategically and identify your solution. Okay, so let's calculate volume related one. It's divided by 1,40,000. Please calculate this. 5,50,000 divided by 1,40,000. It's 3.93 rupees. 3.93. For setup we have total number of setup. How many setup we have? 64. We have 64 setups. So we can calculate 8,20,000 by 64. This will be 12812.50. Hope you satisfied. Okay, and next is the purchase related cost, that is number of purchase order, that will be 544. You can do the sum total. 6,18,000 divided by 544, rupees 1136.03. Okay, so this is very easy. You got the rate. Now we are going to calculate the total cost or cost per unit. I hope you are very clear about this system, that how the things are clear. And if you already refer our past discussion on the numerical of activity based costing, you find that everything is there. You don't need to solve 1,000 questions. Only you have to understand these numerical and practice them. And because if you want to memorize them, it's not a solution. You have to understand these solution, that why you are doing multiplication or why you are doing division. Clear? So let's quickly move ahead. 3.93 for volume related activity. So we can write it volume cost, volume cost, and just put it as a 3.93 for the purpose of your reference. 3.93. Clear? And again we have setup cost. Setup cost. So you calculated these amount. So 12812.50, and the next last one is your purchase cost. Purchase cost, and that will be 1136.03. Okay, these are overhead rate, and now it's a time to multiply this to a specific related activity. Like for volume cost we should divide into the number of machinas, or the machinas is shared with us. So we have 20,000 in case of A, so 20,000 into 3.93, so it will be 78,600. 78,600.
600. For, if you want, I will do that 20,000 into 3.93. Okay, you can do it because examiner should learn that you didn't copy paste from somewhere and you have a good knowledge about the topic. Okay, we have 1,20,000 for B, it's 3.93. Then in the second case we will get 4,71,600 respectively. Okay, then we have a setup cost, and setup cost is 12,812.50. Okay, so it is very important to check the setups. So for the A we have 20 setups, so we'll get 20 setups into 12812.50 and do the respectively. For the B we have 2,56,250, okay, and 5,63,750. 12812. Okay. Okay, so last one is the purchase. We have purchase order of 160 and 384. Multiply with the detail 1136.03. It is advisable to give these small working everywhere. 1136.03. Okay, 1,81,765. I am rounding off. 1,81,765. And in the next case 1136, we have 4,36,236. Okay, this is your distribution of overhead. Now calculate the total cost. 2 plus 3 plus 4. Mark it as a 5. Can you do the total? 78,600 plus 256,250 plus 181,765. You will get total 5,16,615. 5,16,615 for A, and let's calculate for B. 4,71,600,750. Okay, so you have total 14,71,586 for B, and we already have a unit, and the demand of the question is cost per unit. So cost per unit, you can do 5 divided by 1. Okay, so this numbering is going to help you save you a lot of working. Okay, we have 5,000 unit for A, so it will be 103.32. We are rounding off to the 2 digit. 14,71,586 divided by 60,000 unit, you will get 24.53. We can do that. Yes. Okay, this is a solution as per the demand of question. So let's conclude quickly in the other language, and then I'll give you one important further at end of this session. तो आप हमने ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड से कर लिया. अब हमें नेक्स्ट जो कंप्यूट करना है वो किससे करना है? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के मेथड से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ठीक है, तो सेम ए और बी हमारा प्रोडक्ट है दो, और हमने आउटपुट लिख लिया 5,000 and 60,000 रिस्पेक्टिवली. आप देख सकते हैं मैंने नंबरिंग दी है 1 2 3 4. आप भी ऐसे करेंगे तो बहुत ही ईजी प्रेजेंटेशन होगा आपका. वॉल्यूम कॉस्ट है तो सबका आपको रेट निकालना है सबसे पहले. तो रेट हमने निकाला, सबका इंडिविजुअली वर्किंग नोट में आ गया. वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी कॉस्ट का रेट निकाला जो कि वॉल्यूम के बेसिस पे था आपके मशीन आवर्स. सेटअप का आपके नंबर ऑफ सेटअप से, और आपका परचेज रिलेटेड कॉस्ट है टोटल परचेज ऑर्डर से. तो 5,50,000 आपका टोटल वॉल्यूम एक्टिविटी कॉस्ट था.
टोटल 5,50,000 रुपये आपका, 5,50,000 आप टोटल अगर करोगे तो आपका गिवन है आपका कि ये वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी कॉस्ट है। और आपका टोटल मशीन आर कितना है, 1,40,000, 20,000 ए का, 1,20,000 बी का, टोटल 1,40,000। तो रेट आ गया ₹3.93 पर मशीन आर। सेटिस्फाइड? क्यों डिवाइड किया, क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट आपका जो कॉस्ट है वो है सेटअप रिलेटेड कॉस्ट, जिसकी वैल्यू दी थी 8,20,000 रुपये। टोटल नंबर ऑफ सेटअप थे 20 + 44, टोटल 64। आपका कॉस्ट आ गया 12,812.50 कॉस्ट पर यूनिट, आपका कॉस्ट पर सेटअप। ये सेटिस्फाइड हो, क्यों डिवाइड किया, ओके। नेक्स्ट परचेज रिलेटेड कॉस्ट, तो टोटल नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो कॉस्ट थी आपकी 6,18,000 और आपकी परचेज ऑर्डर्स थे 160 रुपए और 384, टोटल आप ऐड करोगे तो 544 आ रहा है, ठीक है। तो आपने कॉस्ट कैलकुलेट कर ली 1136.03। क्यों डिवाइड किया, ये सारी चीजें क्लियर हो, कितना रट लोगे, इसलिए समझो, नहीं क्लियर है तो क्वेरी करो। तो ये सारी चीजें ना बुक में होलिस्टिकली गिवन है, तो आप बार बार ये मत पूछा करो कि इसके बाद और भी बुक लेने, क्यों लेनी है और बुक, वो बुक कंप्लीट है, दैट इज 100% एज पर यूपीएससी, ठीक है। तो आज मैंने आपको लिंक करके भी दिखा दिया, एक ही सैंपल है आपके सामने, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इन कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आपने जो रेट कैलकुलेट किया उसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे ताकि आपसे मिस्टेक नहीं हो, इसलिए मैं नोट डाउन कराती हूँ। क्योंकि कई बार क्या ना, स्टूडेंट जब बार बार नीचे जाके देखते हैं या अपने अलग पेज पे आपने एग्जाम में सॉल्व किया तो गलतियां होने के चांसेस हैं, हम गलतियों को बिल्कुल नेग्लिजिबल करते जाएंगे, ठीक है। तो आपने कॉस्ट पुट कर लिया, वॉल्यूम कॉस्ट का 3.93 आपने कैलकुलेट किया, सेटअप का आपने पुट किया, परचेज का किया रिस्पेक्टिवली, ठीक है। लिखने से मिस्टेक के चांसेस नेग्लिजिबल होते हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सेफेस्ट मोड पे होते जाएंगे प्रैक्टिस के दौरान भी। आपने देखा कि भाई प्रोडक्ट ए का जो है मशीन आ रहा है 20,000, तो 20,000 इंटू 3.93 आपका आ गया 78,600 ए का, और 3.93 1,20,000 मशीन आर से बी के, आपका 4,71,600 आ गया बी का। ऐसे आपने सेटअप कॉस्ट कैलकुलेट किया नंबर ऑफ सेटअप से, इनटू आपने जो रेट निकाला, परचेज कॉस्ट आपने कैलकुलेट किया, टोटल नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, और आपने रेट से मल्टीप्लाई कर दिया। तीनों को ऐड करेंगे 2, 3, 4 को, तो आपकी टोटल ओवरहेड कॉस्ट आ जाएगी। क्योंकि क्वेश्चन में ना ही मटेरियल गिवन है ना ही लेबर, तो छोड़ दो, जो गिवन है उससे करो, ठीक है। तो आपने टोटल कर लिए सारे कॉस्ट। और क्वेश्चन की डिमांड ये मत भूलना, क्योंकि जनरली ना इतना ज़्यादा क्वेश्चन कर लेते हो कि भूल जाते हो कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। क्वेश्चन की डिमांड है कॉस्ट पर यूनिट, तो हमने टोटल यूनिट से डिवाइड कर लिया ए और बी के रिस्पेक्टिवली, आपको मिल जाता है टोटल कॉस्ट पर यूनिट, जो कि है 103.32 रिस्पेक्टिवली 24.53 फॉर बी। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन क्लियर हो गया। भाई ऐसे तो मैंने बहुत सारे आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के न्यूमेरिकल करा लिए, ठीक है। मेरा ये मोटो था इस सेशन के थ्रू कि आपको ये अपडेट कराऊं कि जो भी बुक्स आप रेफर कर रहे हैं, मैं बार बार उसको आपको क्लियर कर रही हूँ, दैट इज होलिस्टिकली ऑन द बेसिस ऑफ यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल, और आपको कोई और बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैक्सिमम सपोर्ट होगा, अगर आपको न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करनी है हम मैक्सिमम आपको प्रोवाइड करेंगे। स्टिल आपकी इच्छा है कि आपने अपने आप को धर्म संकट में रख लिया है और आपको करना ही है, तो आपकी चॉइस है, आप कर सकते हो। इट्स एन फ्रीडम एंड आई हैव नो कंट्रोल ऑन योर फंडामेंटल राइट एंड यू आर फ्री टू डू, बट आई एम हियर टू हेल्प यू एज मच एज पॉसिबल, टू गिव यू द एक्सपर्टीज, टू सपोर्ट यू एज मच एज पॉसिबल। सो इट्स ऑन यू टू टेक इट और नॉट, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल past year paper solution and of 2017 question number 3A. Likewise, we covered everything wherever possible with little bit change of numbers, because it's very important, because I don't want to prepare you like a puppet to mug up the things. I want to prepare you for this marathon and I want you to win that. Okay, so I'm not going to give you the copy paste thing, and yes, we include the numerical of different other like institutes, like we also some of the students who raise the queries with the CA material or ICSI material or CMA material or MBA or graduation, there is no need. This is sufficient for UPSC and you have to be, just stick to it, follow it sincerely, revise a number of time, keep participating, do answer writing practice, and this is also for optional. Keep yourself on the safe zone, and for GS and prelims you make your own strategies. And even most of our students who gave us a review with these things, and today I connected you,
आपने कुछ कहीं किसी और का सुनना नहीं है, क्योंकि भाई सबके लाइफ के सर्कमस्टेंसेस और है, और सब क्या कर रहे हैं जनरल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे बहुत ही कम बच्चे होते हैं वो शेयर करते हैं। मैंने सारी डिसीजन मेकिंग आपके ऊपर छोड़ दी, सब कुछ आपके सामने क्रिस्टल क्लियर है, आपको एनालाइज करना है और उसके बाद ही डिसीजन मेकिंग करनी है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल पास्ट ईयर सिंपल सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3A of year 2017. So I hope I helped you to understand and get into a conclusion, and including that student who raised a query. Please do ask your queries, keep participating, and let help each other. You all people help each other, and I try to give you as much as best I can. Take care, bye bye, and Jai Hind.